Saurav, can you see the board? Yes, sir, I can see the wood. So last day we have completed till glycolysis. You remember? Yes, And in glycolysis, we have ended with the most famous thing, that is pyruvate. So now we are going to see that if pyruvate is formed, there are two different ways also. I said if oxygen is not available, then it will undergo anaerobic respiration, which we have discussed, like ethanol and lactic acid, right? yes. So today, if oxygen is available, then what is going to happen to pyruvate? So this reaction, that is after glycolysis, the pyruvate will be converted into acetyl-CoA through a transition reaction, which is also called link reaction. Why it is called link reaction? Because it is a link which links between the glycolysis and the Krebs cycle. So it is a link between glycolysis, EMP pathway, and Krebs cycle, that is TCA cycle. So let us see what happens over here. First of all, and then I will explain this in details by means of a chemical representation. So first of all, pyruvate, which is formed, we know two molecules of pyruvates are formed. So pyruvate which is formed will undergo decarboxylation like this. So carbon dioxide जो है यहाँ से निकल जाएगा, it will go out. Along with that, that means how many carbon dioxide? Because we have taken two molecules, so two molecules of carbon dioxide will go out. Along with that, there will be formation of two molecules of NADH plus H plus. Two molecules of NADH plus H plus like this. So what will be formed if such things happen? And along with that, there will be addition of two molecules of acetyl-CoA. This one. If such things are there, like acetyl-CoA will be formed, acetyl-CoA will be added. Along with there will be decarboxylation, and there is decarboxylation along with dehydrogenation. That means NAD plus is formed. From NAD plus, NADH and 2H plus they are formed. So this type of reaction is catalyzed by a multi-enzyme complex which is known as pyruvate dehydrogenase. Oh, yes. Yes, pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase. In presence of this enzyme, there occurs this particular reaction resulting in formation of acetyl-CoA. This occurs in the matrix, and after that, this acetyl-CoA is going to enter into the Krebs cycle. It is going to take part in the Krebs cycle. So this pyruvate dehydrogenase has three of its components. That means this pyruvate dehydrogenase has three of its components. What are the three different components of pyruvate dehydrogenase? One is pyruvate dehydrogenase itself, enzyme 1. Pyruvate dehydrogenase PD1, then dihydro lipoyl transacetylase.
This enzyme, then dihydro lipoyl dehydrogenase. So these are the three different components of multi-enzyme complex which is known as pyruvate dehydrogenase. Okay, so how this thing happens, you just first write this down and I will write the reaction in details so that you will understand how this particular, this which has been written in a single step, it involves four different steps to happen. It involves four different steps. Up to glycolysis, it was clear to you initially last day. So today, after glycolysis, the pyruvate which was formed, we are going to come into the fate of the pyruvate if oxygen is present. So first of all, there will be link reaction. I am moving on to the next page. This is clear? Yes, sir. One. And this is 3 carbon. Can you tell me what will be the carbon number over here? Here, 366 carbon. No, no. Each of them will be having 2 carbon. No, Oh, pyruvate is having 3 to 6 and here it will be having 2 carbon. Because you see, 1 carbon is lost from each molecules of pyruvate. This one. Understood? That's so. yes, sir. Noted. I am moving on to the next page. In details, we are going to so here. First of all, let us take the structure of pyruvate. You know that this is CH3. C double bond O and C. This is pyruvate. Now this pyruvate, it will be losing this particular carbon in form of carbon dioxide like this. Carbon dioxide निकल गया है यहाँ से and there is a compound which is known as PPP. This is called thiamine pyrophosphate. Now, with the help of thiamine pyrophosphate, this pyruvate, it will react, right? And there will be formation of, this has gone out. So what will be left over here? That is CH3. Mm,
there will be an H plus ion which will be coming from outside. Say, let's write this H plus ion in this color. So this H plus ion will be coming from outside. This H plus ion is coming from cytosol. Comes from cytosol. And there will be formation of TPP with thymine pyrophosphate, formation of a bond with TPP, right? So And this particular reaction is catalyzed by pyruvate dehydrogenase enzyme 1. So this will be catalyzed by pyruvate that is enzyme 1. Then what will happen? This TPP will come again back over here. This is the first reaction, so I'm writing number 1 because I told you there are 4 different steps in that single step process. So this is the first of them. And then it will be reacting with lipoamide. How lipoamide looks like in this way. This is the structure of lipoamide. Now this will be reacting with this particular compound, which is hydroxyethyl TPP. This is known as hydroxy. I can write it in some other color. Hydroxyethyl TPP. Hydroxyethyl. Why it is called hydroxyethyl TPP? Because you can see hydroxylic group is there. 2 carbons are present. That is why it is ethyl. And this TPP, this TPP is combining with the pyruvate. Understood? That is why it is called hydroxyethyl TPP. And this pyruvate I can also write in this particular color, so that since I'm writing everything in yellow, that is this name of the compound. What happened? Now, after this lipoamide they are formed, they will be converted into, they will react with this hydroxyethyl TPP. They will react with this hydroxyethyl TPP and they will get converted into acetyl dihydrolipoamide. That means acetyl dihydrolipoamide.
CH3, C double bond O. This S will be reacting with this, and this H, which has that means this particular H which has come from outside from the cytosol, it will come over here. So this particular compound is known as hydroxyethyl. This particular compound which is formed, that is known as acetyl dihydro acetyl dihydrolipoamide. Now after this particular compound will again change back over here in this way, and in between what is going to happen, did you understand up to here? Yes. There will be an acetyl CoA which is coming from here. This is HS CoA. I'm writing this H with some other color so that you can easily demarcate. This H of acetyl CoA, and this is known as acetyl CoA. So I can write it in this way. No, this way. And finally, this acetyl CoA will react with this particular compound and get converted into acetyl. That means this is, sorry, this is not acetyl CoA. This is uh, coenzyme A. So you just write down this is coenzyme A. This is coenzyme A, which will get converted into this particular thing. It will get converted into acetyl CoA. How it will get converted into acetyl CoA? See that this CH3 is there from here, this particular CH3, then CH2, and S CoA. See this part, S CoA is coming up. Can you see that this part? Yes. This is going to combine with this part, CH3 C double bond. And once this is formed, this is known as acetyl CoA. So I can write it over here. This is acetyl CoA.
So now in this way acetyl CoA is formed, and this particular structure will change. This particular structure will be taking this part. Hydrogen, now this hydrogen I have to write in this color. You have seen that we have taken hydrogen in this orange color, this hydrogen, and another hydrogen which will be coming in form of blue color. Why? Because see that this hydrogen, blue color hydrogen, has come from which compound? Coenzyme A, है ना? Yes. It has come from coenzyme A, while this H has come from cytosol. Yes, I have written it over here. Yes. And I can write it this H, blue color H, has come from this coenzyme A. Like this. Mhm. After this, what will happen? It will get converted into this particular structure. This is known as dihydro dihydroxylipolate. This is known as dihydroxylipolate. And in this, it will be giving the hydrogen to one FAD plus it will be giving the hydrogen to one FAD plus and it will get converted into FAD H2. It will get converted into FADH2. Now this FADH2, further it will convert this electron to NAD plus it will change into NAD plus H plus, and this FAD, yes, then again this FADH2 will get converted into, that means here FAD plus gets converted into FADH2, and this FADH2 will again get converted into FAD plus by giving electron to NAD plus.
and NAD plus will take up the electron and hydrogen to form NADH plus H. Oh, Understood? That means yes. from here, that is hydroxyethyl TPP, that is thiamine pyrophosphate. This one is thiamine pyrophosphate. I'm writing this. Lipoamide will be reacting with it, and what will happen? This TPP is returned back over here. This portion, that is CH3COH, is attached to the lipoamide. This hydrogen come over here. That means this portion. Sulfur will be present over here. To this sulfur, this hydrogen will come and bind like this. This hydrogen will come and bind over here, and they will constitute acetyl dihydrolipoamide. And this acetyl dihydrolipoamide will react with coenzyme A to form acetyl CoA. And then acetyl dihydrolipoamide will get converted into dihydroxylopolate, dihydro xylipoate, dihydroxylipoate. And ultimately, this dihydroxylipoate, that means it is having two hydrogen, dihydroxylipoate will get converted into lipoamide. It will get converted into lipoamide by giving away this two hydrogen to FAD plus. तो FAD plus क्या करेगा? ये दो हाइड्रोजन को ले लेगा और उसके बाद वो FADH2 में बदल जाएगा. It will get converted into FADH2 ऐसे. और ये FADH2 फिर उसका जो दो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, वो NAD plus को दे देगा. And after taking that, NAD plus will get reduced to NADH plus H plus. Understood? Okay. So let us write down the enzymes over here. That is dihydrolipoyl. Enzymes I'm writing with white. Dihydrolipoyl dehydrogenase. तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया. दैट मीन्स नंबर 2, द सेकेंड वाला. थर्ड वाला रिएक्शन यहाँ पे है. एंड फोर्थ वाला रिएक्शन ये रिएक्शन है. एंड फिफ्थ वाला रिएक्शन. So 5 steps are involved in this reaction. Understood? So Yes. अगर तुम ये रिएक्शन को देखोगे तो देखो इसमें क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रहे हैं. पहले तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया जो एक प्रोडक्ट है. शुरुआत से हम किसको लेकर रिएक्शन कर रहे हैं? पायरुवेट को. तो ये हो गया एक प्रोडक्ट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड. और इसके साथ साथ यू कैन सी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NADH plus H plus. इसका भी फॉर्मेशन हो गया. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
जो है कि ये एसिटाइल कोए का भी फॉर्मेशन हो गया. Yes, acetyl CoA is also formed in this process. तो अगर हम देखेंगे कि जो रिएक्शन मैंने पहले किया था कि पायरुवेट gets converted into acetyl CoA with elimination of carbon dioxide and along with formation of NADH plus H plus involving और इसके साथ H's CoA भी है involving the enzyme pyruvate involving the enzyme dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase. तो ये एंजाइम ये जो रिएक्शन है ये छोटा वाला जो रिएक्शन है यही मतलब लिंक रिएक्शन इसमें हम लोग दिखाएं. दैट मीन्स आई हैव शोन इट. एक बार हाँ एक बार देख लो. यहाँ पर तो डायरेक्ट को कहाँ पर भी हाँ ये वेरी गुड क्वेश्चन. तूने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. देखो ये जो ग्लाइकोलिसिस है या क्रेब्स साइकिल है या लिंक रिएक्शन है तीनों जगह पे कोई भी जगह पे तुमको नजर नहीं आएगा किस चीज का ऑक्सीजन का. लेकिन ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा. तुम पूछ सकते हो क्यों. इसका ये क्यों का जवाब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि साइटोक्रोम पाथवे में छुपा हुआ है. ये राज है. राज खुल जाएगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि साइटोक्रोम पाथवे को स्टडी करेंगे. फिर भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि ये जो मतलब ऑक्सीजन नहीं है ये ठीक है. लेकिन ये जो NADH का फॉर्मेशन हुआ और ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी जो NADH का फॉर्मेशन हो रहा है उस NADH अगर NADH बन के रह जाए तो वहां पे कैटालाइज कौन करेगा. उसको भी तो फ्री होना चाहिए. देखो मेरे पास पेन है ना. हाँ मानो कि मैं NADH प्लस H प्लस हूँ. NADH हूँ ठीक है. और मैं किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. ये बोर्ड है. बोर्ड के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ. ये बोर्ड मुझे ये मैं मेरा हाथ खाली है. मुझे ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. तो मेरे हाथ में क्या है इलेक्ट्रॉन. मैं NAD प्लस हूँ. अब जैसे जैसे मैंने बोर्ड के साथ रिएक्ट किया बोर्ड ने मुझे क्या दिया. बोलो बोलो बोलो. मुझे ये पेन दिया. ये H प्लस. ये पेन क्या है H प्लस मुझे दे दिया. और मैं क्या बन गया NADH. NAD प्लस था मैं. अब मैं बन गया NADH प्लस H. हाँ अगर मैं NADH बन के रह जाऊं क्या मैं फिर से इसके साथ विक्रिया यानी कि रिएक्शन कर सकूं. Shall I be able to react with it again? No.
बिकॉज आई हैव नो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। हाथ ऑलरेडी ऑलरेडी एंगेज्ड है किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से। कहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन को मैं एकोमोडेट करूं? तो ये इलेक्ट्रॉन को मुझे किसी को देना है, लेकिन कौन है? कौन है वो बंदा जिसको मैं ये इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? वो है ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कहाँ पे है? यहाँ पे नजर नहीं आएगा, वो छुपे हुए हैं दूर। कहाँ पे? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट पे खड़े हैं। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं जाऊंगा उसके पास, ये इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मेरा हाथ खाली करके मैं लौट के आ जाऊँ। क्यों आऊंगा? क्योंकि मैं मुझे इसके साथ रिएक्शन करना है। मैं NAD+ बन के आ जाऊंगा, और जैसे जैसे मैं इसके साथ रिएक्ट करूंगा तो वो मुझे फिर से एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन मुझे पकड़ना है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? यस। तो तुम मुझे थोड़ा सा समझा दो, जो तुम्हारे मन में आए, मतलब जितना तुम समझा, यू हैव अंडरस्टूड। मतलब ये जो प्रश्न तुम मुझे पूछा है, उसका ही जवाब तुम दो। अब मैं सम आफ्टर आई एक्सप्लेन। बोलो यस। बोलो बोलो। आंसर जो है वजह से मैंने हम्म, आयोन का जो कि ओपिनियन ये अगर NAD+ के साथ H+ मिल जाता है तो क्या होगा? कोई आयंस नहीं, इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन ओ कैरियर इन फ्री नहीं है, सब इंगेज्ड है। इंगेज्ड है मतलब, अगर इंगेज्ड है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा? हाँ है ना? अगर ये इंगेज्ड है, मैं अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर मैं NADH बन के रह जाऊं, तो फिर मैं रिएक्शन कैसे करूंगा? तो फिर वो मुझे इलेक्ट्रॉन फिर से देगा, एक नया इलेक्ट्रॉन देगा। मानो कि ये इसी का जो ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा। तो मुझे दिया ये रिएक्शन करने के बाद, तो मुझे इसको भी पकड़ना है। कैसे पकड़ू? मैं ही हाथ से तो पकड़ना है ना। तो मेरे हाथ में क्या है? ऑलरेडी एक पेन है। तो मैं इसको कैसे पकड़ूं? तो उसका मतलब मैं इसके साथ अब रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, जब तक ना मैं ये पेन को किसी को दे दूं। कौन है? किसको देंगे? वो ऑक्सीजन है। वो वहां पे खड़ा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पर, और उसको मैं दे सकता हूँ। फिर हाथ खाली हो जाएगा। जैसे जैसे मेरा हाथ खाली हो जाएगा, अब मैं इसको फिर से NAD, मैं अब क्या हूँ? NAD+। अब इसके साथ मैंने रिएक्ट किया, ये मुझे इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब मैं क्या क्या बन गया? NADH। तो तुमको समझ में आया ये ऑक्सीजन का रोल कहाँ पे है? यस। तो ये हो गया मेरा लिंक रिएक्शन। अब चलते हैं कि पायरुवेट ने बनाया एसिटाइल कोए, बना दिया। ये यस। एसिटाइल कोए, इसका भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन चाहिए, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें क्या होना है? ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मैं इसके ऊपर तुमको क्वेश्चंस भी दे दूंगा आफ्टर टीचिंग, मतलब आज नहीं, सामने मतलब नेक्स्ट डे। तो तुम थोड़ा सा पढ़ के, मतलब NCERT जो है उसको पढ़ के आओ, तो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस आल्सो। मतलब थोड़ा ओके। थोड़ा ट्विस्टी क्वेश्चन जो दिमाग को ओपन कर देगा। मतलब यू विल हैव अ गुड ग्रिप और ग्रास्प ऑन दिस, so that any question will be easy। और थियोरीज भी थोड़ा थोड़ा है, इसके साथ हम लोग वो भी कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एसिटाइल कोए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है। तो अब वो एंटर करेगा किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ पे साइक्लिक सेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है। और वो साइक्लिक सेट ऑफ रिएक्शन क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्यों क्रेब्स साइकिल? क्यों नहीं सौरव साइकिल? क्यों नहीं मेरा नाम राजश्री है तो राजश्री साइकिल? क्योंकि क्रेब्स ने डिस्कवर किया है ना,
उनके लिए उसको क्रेब्स साइकिल हम लोग कह सकते हैं, और इसके साथ साथ उसको हम लोग TCA साइकिल भी कह सकते हैं। ये क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड है, जैसे मैंने तुमको फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाया था, मैंने कहा कि C3 पाथवे, C4 पाथवे, तुम्हें याद है? हाँ, C2 पर। C2 पाथवे भी हम लोग, मतलब ये जो C3 C4 ये क्या है? पहला जो स्टेबल कंपाउंड है उसमें कितना कार्बन है? जैसे हाँ, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो पहले C3 का, तो उसके उसी हिसाब से C3 पाथवे। ऑक्सालो एसिटेट पहला C4 का स्टेबल कंपाउंड। यहाँ पे प्रेप साइकिल में फर्स्ट जो कंपाउंड होगा, यानी कि साइट्रेट, साइट्रिक एसिड, उसमें तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा, और उसके लिए हम लोग उस साइकिल को TCA साइकिल भी कह सकते हैं।